Hello guys. Welcome back to VK Tutorials educational channel. In this video we will learn new English words meanings and their usages. So let's start learning few words. Decry or denigrate means to belittle someone. Usage: I would not for a moment wish to decry or denigrate the very real achievements made by a disabled people. Decry, denigrate, belittle someone का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना या फिर किसी को कम करके बात करना. Egregious means outrageously bad. Usage: it was an egregious mistake which he regretted within 24 hours. Egregious का मतलब होता है कि बहुत बुरा. Inveterate means habitual. Usage: Raju is an inveterate reader who always has a book in his hands. Inveterate habitual का मतलब होता है कि आदत, कि राजू आदत से ही एक रीडर है और उसके हाथ में हमेशा बुक्स दिखाई देते हैं. Disparate means of a distinct kind. Usage: we are disparate people. We have more people than we can feed. Disparate का मतलब होता है एक प्रकार के जीव, जंतु, कुछ भी हो सकता है. जैसे हमारे सोसाइटी में कहते हैं अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, उस तरह से. Clamor means to proclaim something noisily. Usage: the clamor of traffic has receded to a distant murmur. क्लैमर का मतलब होता है कि बहुत सारे आवाज एक साथ गूंजना. जैसे स्कूल में होते हैं, बच्चे आवाज करते हैं, वैसे ट्रैफिक में हॉर्न्स, चीखना, चिल्लाना एंड ऑल. Murmur means softly spoken. Usage: we fell asleep to the gentle murmur of the ocean waves. मर्मर का मतलब होता है धीमी आवाज में बात करना, जैसे समुद्र के लहरों की आवाज. Thank you guys for watching the video. I hope you all liked the video. I hope you all learned few words. Please do like, share and subscribe.